ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम लोग 2019 एमपी सिविल जज फेज 2 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं, in which basically we are planning to start our discussion with CRPC, then moving towards Negotiable Instrument Act. And as I have stated earlier as well, कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर होंगे इनमें अभी मैं पहले लॉ का सेगमेंट डिस्कस करूंगा, जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश बाद में डिस्कस किए जाएंगे सेपरेटली फॉर ऑल द पास्ट ईयर पेपर्स। उसके बाद पर्टिकुलरली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि 2019 फेज 1 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उससे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो प्लीज कंफर्म कीजिए इन द चैट सेक्शन। चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई क्लासेस हो उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, कोई लाइव वीडियोस अपलोडेड हो तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमें एमपी सिविल जज प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गो चेक आउट द लिंक, देयर यू विल फाइंड 10 plus mocks, one-on-one mentoring and doubt clearing session, recorded video lectures for all the subjects. तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। Now the first question is, that is question number 91. In case of a warrant trial, A, the court of its first instance will issue a warrant of arrest against the accused. B, the police officer cannot arrest without warrant. C, only those offenses are included which are punishable with imprisonment for a term exceeding 2 years. D, only those offenses are included which are punishable with death, imprisonment for life, or for a term exceeding 2 years. What should be the correct answer? Yes, question number 91. क्वेश्चन नंबर 91 सीआरपीसी का फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताइए, जल्दी से बताइए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर पाए। दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेफरेंस ऑफ अ वारंट केस। The court in its first instance will issue a warrant of arrest against the accused. The police officer cannot arrest without warrant. C, only those offenses are included which are punishable with the imprisonment for a term exceeding not 2 years. Only those offenses are included which are punishable with death, imprisonment for life, or for a term exceeding 2 years. Its correct answer should be D. D for Delhi. That is, only those offenses are included which are punishable with death, imprisonment for life, or for a term exceeding 2 years. Next question. Section 156(3) of CRPC, the power to direct investigation is vested only. Yes, Ankita Gupta ji, D is the correct answer for 91-92 question number. Under section 156(3) of CRPC, the power to direct investigation is vested only. A, High Court. B, Session Judge. C, Magistrate. D, all of the above. 156 subclause 3, power to direct the investigation. Which of the following officer of court can direct the investigation? High Court, Session Judge, Magistrate, all of the above. So its correct answer should be D, C, Magistrate. अगर आप सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ओनली द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Magistrate can invoke power under section 156 subclause 3 of CRPC even at post cognizance state. It was held in the case of A, Vinu Bhai, Hira Bhai and others versus State of Gujarat and others 2019, Alok Verma versus Union of India 2019, B.K. Pavitra versus Union of India 2019, or Pattu Rajan versus Union of India 2019. Question number 93. Question number 93. Magistrate can invoke the powers under section 156 subclause 3 of CRPC even at post cognizance state. It was held in the case of. Yes, अंकिता जी, ये बी आप आंसर किसका बोल रहे हैं? प्लीज मेंशन इट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 93. इट्स करेक्ट आंसर विल बी, in which case it was held, its correct answer will be A, Vinu Bhai, Hira Bhai and others versus State of Gujarat and others. Next, if question number 94, question number 94,
if the accused, though not of unsound mind, cannot be made to understand the proceeding of the court, where the court will a stay the proceeding, may proceed with the proceeding, will forward the proceeding to the high court, and D, none of the above. If the accused, though not of sound mind, cannot be made to understand the proceeding of the court will A, will stay the proceeding, B, may proceed with the proceeding, C, will forward the proceeding to the high court, and D, none of the above. Question number 94. I hope I am audible and visible to all of you. आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? I'm sure. Please just let me know. Question number 94. What should be the correct answer? अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, लेकिन स्टिल ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस? कोर्ट प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा, कोर्ट प्रोसीडिंग के साथ कंटिन्यू करेगा, कोर्ट इज गोइंग टू फॉरवर्ड द प्रोसीडिंग टू द हाई कोर्ट, एंड डी, नन ऑफ द अबव. 94. Its correct answer is B. The court may proceed with the proceeding. Next, question number 95. Constitutional bench of Supreme Court resolved the conflict of its earlier decision regarding the criminal case power in the matter, adding additional accused in the case of A. Hardeep Singh versus State of Punjab and others, B. Mohammad Shafi versus Mohammad Rafiq. 94 का A बोल रही हैं अंकिता जी, 94 का B होगा. अंकिता जी 94 का B होगा. The court may proceed with the proceeding. Here you have to understand that the accused person is not of unsound mind, so the court need not to stop the proceeding. The court can continue with the proceeding. Hardeep Singh versus State of Punjab and others, B. Mohammad Shafi versus Mohammad Rafiq, C. Ranjit Singh versus State of Punjab, D. Hema Mishra versus State of UP. Question number 95. What should be the correct answer? Constitutional bench of Supreme Court resolved the conflict of its earlier decision regarding criminal court power in matters adding additional accused in a criminal case is, like in which case the Supreme Court of India held कि अंडर, अगर आप लोगों को पता हो, सेक्शन 319, सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी. यस, इट्स आंसर इज हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अंकिता जी. ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो तो सेक्शन 319 में ये चीज डिफाइन है, एडिशनल प्रोसिक्यूशन. और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू ये हेल्ड किया था कि अगर कोर्ट को किसी भी स्टेज पे ये चीज लगती है कि कोई भी पर्सन अक्यूज था और उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, ड्यूरिंग इंक्वायरी और trial, the court can add up the name of that person. It was held in the case of Hardeep Singh versus State of Punjab. Next, A commits robbery on B and in doing so voluntarily causes hurt to him. Whether A may be separately charged for offenses under section 323, 394 and 392 of IPC. A ने रॉबरी कमिट की है B पे, ठीक है. Whether A can be separately charged for the offenses under section 323, 392 and 394 of IPC. Option A, yes. Option B, no, only under section 394. Option C, in all said offenses only with the consent of the court, and D, in all said offenses only upon the application of prosecution. This is question number 96. Question number 96 है, charges से related है. What should be the correct answer? Yes, its correct answer will be A. A means yes, he can be charged separately for all the offenses, 323, 392 and 394. Right? Question number 97. Question number 97 क्या बोल रहा है? When the offense otherwise compoundable are not compoundable. A, when the person competent to compound is dead. Option B, when the person competent to compound is under the age of 18 years. Option C, when the accused person has been committed for trial. Option D, when the accused person is, by the reason of previous conviction, liable either to the enhanced punishment or to a punishment of different kind for such offense. Section 320 of CRPC से related question है, question number 97. What should be the correct answer for this? जल्दी से बताइए. Question number 97. What should be the correct answer? Yes. कब offenses जो otherwise compoundable है उनको compound नहीं किया जाएगा? When the accused person
like the person who is competent to compound is dead, when he is a minor, when the accused person has been committed for trial, when the accused person by the reason of previous conviction is held liable for enhanced punishment. Its answer is D. D, what it is saying, when due to the previous conviction, the accused person is liable to the enhanced punishment or to a punishment of different kind for such offense. Next, new chapter of plea bargaining was added in CRPC by new chapter of plea bargaining. ठीक है, was added in CRPC. Yes, Ankita Gupta ji, its answer will be D. New chapter of plea bargaining was added in CRPC by A. Criminal Law Amendment Act 2005, B. Criminal Procedure Code Amendment Act 2005, C. Indian Evidence Amendment Act 2005, D. Indian Penal Code Amendment Act 2005. This is your question number 98. प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर कहां से इंक्लूड हुआ है? इट्स करेक्ट आंसर इज ए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट. यस, 97 का करेक्ट आंसर इज नो. 97 का अंकिता जी करेक्ट आंसर विल बी डी. ठीक है, अगर आप सेक्शन 320 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इससे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी पर्सन डेड है या माइनर है, तो उसके बिहाफ पे जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल गार्जियन है, ठीक है, दे कैन, और लीगल एयर्स हैं, दे कैन कंपाउंड द ऑफेंस विद द कंसेंट ऑफ द विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट. लेकिन उस केसेस में ऑफेंसेस कंपाउंड नहीं होंगे वेयर द पर्सन हैज बीन हेल्ड लायबल फॉर एनहांस्ड पनिशमेंट. 98, इट्स करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005. प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर ऐड हुआ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 से. नेक्स्ट, any dispute regarding the possession of, Ankita Gupta ji, oh, I got the question number wrong. Okay, no issues Ankita ji. Next question क्या बोल रहा है? 99 question क्या बोल रहा है? Any dispute regarding to possession of immovable property is decided by A. Judicial magistrate, B. Executive magistrate, C. either A or B, D. neither A nor B. इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 99 को आंसर करने से पहले याद रखिए कि ये क्वेश्चन सीआरपीसी का है. आपके क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन था कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद सीआरपीसी. सो आंसर क्वेश्चन नंबर 99 अकॉर्डिंगली. यस, इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. अगर आप सेक्शन 145 की लैंग्वेज को क्लोजली जाके पढ़ते हैं तो as per section 145 it is clearly mentioned that any dispute relating to possession of immovable property should be decided by executive magistrate. ठीक है, I hope it is clear. Next, question number 100. A magistrate dismisses a complaint after inquiry holding that the identity of the accused is not disclosed in the complaint order of the magistrate. Is मैजिस्ट्रेट ने एक कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया है. द रीजन बिहाइंड डिसमिसल इज देयर वाज नो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड. द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इज ऑप्शन ए करेक्ट, सिंस इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्राइब द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड. ऑप्शन बी correct, even if the magistrate is disclosed in, even if the identity is disclosed in inquiry, it is not revealed from the complaint. Option C incorrect, since it is not mandatory to describe the identity of the accused in the complaint. D incorrect, since the proper course to the magistrate was to reject the complaint. Question number 100, what should be the correct answer for this? Yes, for this question correct answer will be C. What is C is saying that incorrect, since it is not mandatory. जब भी आप complaint कर रहे हैं magistrate को तो it is not mandatory to describe the identity of the accused in the complaint. Next, question number 101. If a complaint case is made to appear to magistrate that an investigation by the police officer is in progress in relation with the same offense, which of the following orders magistrate may pass under section 210 of CRPC 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये कोड रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ कोड्स दिए हुए हैं. फर्स्ट क्या बोल रहा है? रिटर्न द कंप्लेंट टू बी, रिटर्न ऑफ द कंप्लेंट टू बी रीफाइल्ड आफ्टर पुलिस इन्वेस्टिगेशन. सेक्शन 210 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है? As per section 210,
अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है जिसपे मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई और उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे पुलिस इज आल्सो कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, देन व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस? ए, return of complaint to be refiled after police investigation. B, second, stay of proceeding of inquiry or trial of such complaint. Third, call a report from investigating officer. Fourth, refer the complaint for investigation by the police. Fifth, refer the complaint to the chief judicial magistrate. अब देखिए इसके ऑप्शंस. ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? थर्ड एंड फिफ्थ. ऑप्शन बी सेकंड एंड फिफ्थ. Option C, second and third, and option D, only second. Yes, question number 101. What should be the correct answer for this? एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए. Then we will move further. What should be the correct answer for this? Yes, its correct answer will be third, C. That is, call a report from investigating officer and stay the proceeding of inquiry or trial to such complaint. Right? Next question. Victim means and includes. Victim means and includes. Victim की definition जो Criminal Law Amendment Act 2009 से आई है, उसमें victim की definition में क्या क्या include है? Question number 102. A, a person who has suffered any injury or loss caused by the reason of act or omission for which accused person has been charged. B, his or her legal guardian. C, his or her legal heirs. And D, all of the above. Its correct answer should be, yes, its correct answer will be D, all of the above. Question number 103. What persons may be charged jointly? Again, another question relating to code. First, code क्या बोल रहा है? Persons accused of same offense committed in the course of the same transaction. Second, persons accused of an offense and person accused of abatement of or attempt to commit such offense. Third क्या बोल रहा है? Person accused of more than one offense of same kind and the person accused of abatement or attempt to commit such offense. And fourth क्या बोल रहा है? Person accused of more than one offense of same kind within the meaning of section 219 committed by them jointly within the period of 12 months. So A option क्या है? Only code first, second and third follow. B option क्या है? Only first, third and fourth code follow. Option C, all of the above. D, none of the above. Its correct answer for question number 103, the correct answer will be code 3. That is all of the option C. That is all of the above. It means that all the persons who have abated any offense, attempted any offense, committed the offense of same type, committed same kind of offense within the span of 12 months can be charged jointly. Now, next question, question number 104. Question number 104 क्या बोल रहा है? With regard to place of inquiry or trial, which of the following statement is false? Inquiry या trial से related कौन सा statement है जो कि false है? Right? So, A option क्या बोल रहा है? When it is uncertain in which of the several local areas of an offense was committed, it may be required into or tried. Ankita Gupta ji, B, C. Ankita ji, try to write the question number as well. ठीक है? This is question number 104, which I am discussing as of now. With regard to place of inquiry or trial, which of the following statement is false? A, when it is uncertain in which of the several local areas of an offense was committed, it may be inquired or tried by a court having jurisdiction over any of such local area. B option क्या बोल रहा है? When an offense is committed partly in one local area and partly in another local area, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local area. Option C क्या बोल रहा है? When an offense is a continuing one and continues to be committed in more local areas than one, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such area. Option D, where it consists of several acts done in different local areas, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over the local area in which the first of such acts was committed.
हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है. यस, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 104 विल बी डी, बिकॉज डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर सेवरल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में कोई भी ऑफेंस हुआ है तो इट कैन बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय अ पर्टिकुलर कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में पहली बार ऑफेंस हुआ था. राइट, सो दैट इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 105, लास्ट क्वेश्चन फॉर सीआरपीसी. Any private person may arrest any person who in his presence commits. Any private person may arrest any person who in his presence commits A. Cognizable offense, B. Non-bailable offense, C. Cognizable and non-bailable offense, D. Non-cognizable and non-bailable offense. अगर आप लोगों ने सीआरपीसी में अरेस्ट ऑफ पर्सन वाला जो चैप्टर था उसको अच्छे से देखा होगा तो you will be able to answer this question. ये क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन नंबर 43 ऑफ सीआरपीसी से लिया गया है. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताइए. क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? यस, फॉर इट्स करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज द ऑफेंस of cognizable and non-bailable nature committed in front of a person, then only he is empowered to arrest a private person. Right? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106. This question is related with Negotiable Instrument Act. A signs the instrument in the following terms. State the instrument which cannot be considered as a promissory note. ठीक है, A ने एक इंस्ट्रूमेंट, कई सारे इंस्ट्रूमेंट साइन किए हैं जिनमें से हमें बताना है 105. अंकिता जी सिंह सी, बिल्कुल अंकिता जी, सी इज द करेक्ट आंसर. 106, ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स. स्टेट द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रॉमिसरी नोट. ऑप्शन ए, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर INR 500. B, I acknowledge myself to be indebted to B for INR 1000 to be paid or demand for value received. Option C, I promise to pay B INR 10,000 after 3 months. D, I promise to pay B INR 500 7 days after my marriage with C. So in this particular question the correct answer will be D, क्योंकि बाकी सारे जो कंडीशंस हैं, बाकी सारे जो एग्जांपल्स हैं उनमें जो प्रोमिसरी एस्टॉपल के जो टर्म्स हैं या कंडीशंस हैं उनमें सर्टेनिटी है, लेकिन डी में सर्टेनिटी ऑफ टाइम नहीं है. नहीं पता कि एक की शादी कब होगी. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी, और उसके 7 दिन बाद वो पेमेंट करेगा. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट may order the drawer of the check to pay interim compensation. A, in summon case where drawer pleads not guilty. B, in other cases after drawer's statement under section 313 of CRPC has been recorded. C, in a cases tried summarily when notice for appearance of drawer is issued. D, all of the above. So what should be the correct answer of question number 107? When the court may order for interim compensation. So its correct answer will be yes. क्या होगा? Its correct answer will be A. In summon cases where the drawer plead not guilty, then the court may order to payment of interim compensation of up to 20% of the total check amount. Right? Next question. With regards to the place of place of inquiry and trial नहीं. Next. Which of the following statement is false? This is your question number 108. Which of the following statement is false? If the person committing an offense under section 103 which of the following statement is false if a person committing an offense under section 138 of Negotiable Instrument Act is a company? A, every person who at the time of offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed guilty. Option B, हमसे क्या पूछा गया है? Which of the following statement is false? Which of the following statement is false? Right? So
बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेयर अ पर्सन इज नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बाय द वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ही शैल नॉट बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, if it is provided that the offense has been committed with the consent of, connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer of the company shall also be deemed to be guilty. And D, none of the above. Which of the following is the incorrect statement पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 108 में। तो याद रखिए, इट्स करेक्ट आंसर विल बी 108, करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन इज प्रिटी क्लियर, क्योंकि अगर आप बाकी तीन केसेस पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यूजुअली अ पर्सन लाइक डायरेक्टर, अ कंपनीज डायरेक्टर, chairperson or board of directors, they are going to be held liable. In case of a state or central government का officer ex officio chairman बना है एक कंपनी का, then he will not be held liable. Ankita ji, try to write the question number as well. That will be easy for me to have a look of which question you are answering for. ठीक है? So its correct answer will be D, question number 108. Question number 109. When no rate of interest is specified in the instrument, the interest on the amount due shall be calculated at the rate of A 6%, B 9%, C 12% and T 18%. अगर कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसके टर्म्स के अंदर, देन व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, 6%, 9%, 12%, 18%. क्वेश्चन नंबर 109. What should be the correct answer? So its correct answer is D, that is 18%. D, 18%. Next question. Amendment in section 148 of Negotiable Instrument Act 1881, effective from 1st September 2018, shall have a retrospective effect. It was held in the case of A. Surinder Singh Biswal versus Varun Gandhi 2019. 109, Ankita ji saying D. बिल्कुल Ankita ji, D is the correct answer 109 का। 110, amendment in the section 148 of Negotiable Instrument Act is going to have retrospective effect. ये किस केस में held हुआ था? By the Supreme Court. Surinder Singh Biswal versus Varun Gandhi, Indian Bank versus Promela, Canara Bank versus Kameshwar Singh, Shri Uttam Chand versus Nathuram. What should be the correct answer for question 110? The correct answer will be yes. What should be the correct answer? The correct answer is A. Surinder Singh Biswal versus Varun Gandhi. चलिए, now 110 का C नहीं होगा अंकिता जी, its answer will be A. Now we are going to discuss Madhya Pradesh Civil Judge Prelims 2019 law question paper of shift 1. याद रखिए 2019 में एमपी सिविल जज के दो एग्जाम हुए, फेज 1 और फेज 2 में। फेज 2 में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, फेज 1 में दो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फेज 1 की शिफ्ट 1 का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर विल बी, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, which article in the Constitution of India relates to the power of President to grant pardon, etc., and to suspend, remit, or commute sentence in certain cases? Power of the President to grant pardon, suspend, remit, or commute sentence in certain cases is defined under which particular article? Question number 1 है ये 2019 के क्वेश्चन पेपर का। A. Article 71, B. Article 72, C. Article 58, and D. Article 74. What should be the correct answer? Question number 1. Which of the following article talks about the pardoning power of President? Its correct answer is B. Article 72. Next. Who decides a dispute regarding election of President of India? Who decides a dispute regarding election of President of India? A. Election Commissioner, B. Chief Justice of India, C. Parliament, and D. Supreme Court. Question number 2.
Who decides a dispute regarding the election of President of India? A. Election Commissioner, B. Chief Justice of India, C. Parliament, and D. Supreme Court. Its correct answer is going to be D, that is Chief Justice of India. Yes. अविनाश कुमार जी, आप किस क्वेश्चन के आंसर को सी बोल रहे हैं? प्लीज मेंशन इट. नेक्स्ट, अंकिता जी, यस, 72 आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर. By which amendment of the Constitution of India provisions regarding fundamental duties were inserted? किस पर्टिकुलर प्रोविजन से फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजन इंसर्ट हुए हैं? योर ऑप्शंस आर फ्रॉम 26 जनवरी 1950 सिंस द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज तब से हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है. ए. बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 Section 11 with effect from 3/1/1977. Option C, 46th Amendment of Constitution 2002 in Section 4. D option, inserted by Constitution 42nd Amendment in 1976, Section 12 with effect from 3rd 1/1977. So what should be the correct answer for this? Yes, question number 3. Its correct answer is question number 3. Its correct answer will be B. That is, these provisions have been inserted by 42nd Amendment by Section 11. Right? Next question. On proclamation of emergency under Article 352, the President has the power to suspend the fundamental rights except the rights secured by. जब भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं 352 के अंदर, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते? दैट इज द क्वेश्चन. ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 एंड 20. ऑप्शन बी, 1976 वाले का आंसर यू आर सेइंग. अविनाश जी, ओके, सो इट्स आंसर इज बी, राइट. चलिए, ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल द राइट्स एक्सेप्ट. थर्ड का डी. अविनाश कुमार जी, 21 एंड 22. बिल्कुल अविनाश जी, दिस इज करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन का अंकिता जी बोल रहे हैं डी. नहीं अंकिता जी, थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज सेक्शन 11, राइट? इट्स करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. द करेक्ट आंसर विल बी बी. Sorry, question number 4, the correct answer is B, that is Article 20 and 21, right? Next, when two houses of parliament differ regarding a bill, deadlock is resolved by. जब दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक आ जाता है, देन इट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय ए, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, B, by the President of India, C, the Prime Minister of India, and D, special committee. This particular question is your question number 5. Question number 5. Deadlock कैसे resolve होगा? Joint sitting of the houses, President of India, Prime Minister of India, special committee. So its correct answer is joint sitting of both the houses of parliament. Question number 5, correct answer will be A. Next, who among below which case is not related to constitutional amendment? Which of the following case is not related to constitutional amendment? A, Shankari Prasad Singh Deo versus Union of India. Yes, Avinash ji, fifth ka correct answer will be A. Sixth question, among below which case is not related to constitutional amendment? कौन सा केस है जो constitutional amendment से related नहीं है? Question number 6. Option A, यस अंकिता जी, 5 का ए होगा. क्वेश्चन नंबर 6, शंकारी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बी, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. सी, आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. एंड डी, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन सा केस नहीं है? इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ India case. Maneka Gandhi versus Union of India. Dash, question number 7. Dash, of the total number of members of GST Council shall constitute the quorum at its meeting.
डैश, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम एट इट्स मीटिंग। ए 1/3, B 1/4, C half, D 2/3. What should be the correct answer for question number 7? कितने लोग मिलके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के काउंसिल का कोरम क्रिएट करते हैं? 1/3, 1/4, half and 2/3. So its correct answer is C, that is half. Yes, Ankita ji, question number 6. Its correct answer is D. Question number 7. Its correct answer is C. Next. Question number 8. Disqualification. Avinash Kumar ji बोल रहे हैं 6 का D. Yes, Avinash ji, 6 का D is the correct answer. 7th question का what should be the correct answer? 8th question क्या है? Disqualification on the ground of defection. 7th का C. बिल्कुल 7th का C is the correct answer. 8th क्या बोल रहा है? Disqualification on the ground of defection would not apply in the cases of merger if not less than dash of members of legislative party concerned have agreed to such merger. A 1/4, B 1/3, C half, D 2/3. 1/4, 1/3, half, 2/3. This is your question number 8. So its correct answer is D 2/3, that is 66%. अगर 66% या उससे ज्यादा मेंबर्स मर्ज हो जाते हैं किसी भी एक पार्टी के दूसरी पार्टी पे, तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा, राइट? शेड्यूल 2 and article 76 is talking about this provision. Next question. Your question number 9. The statement what cannot be done directly cannot be done indirectly relates to the doctrine of A. Question number 9 है ये. The statement what cannot be done directly cannot be done indirectly as well relates to the doctrine of A. Doctrine of pith and substance. Ankita ji, 8th का D होगा. You are saying? Just a second. Question number 8. Yes, its correct answer will be D. 9th question. So, doctrine of pith and substance, doctrine of implied power, doctrine of severability, and doctrine of colorable legislation. Yes, Avinash Kumar ji, 8th ka D will be the right answer. The statement what cannot be done directly cannot be done indirectly relates to the doctrine of A. Doctrine of pith and substance, B. Doctrine of implied power, C. Doctrine of severability, and D. Doctrine of colorable legislation. So its correct answer should be question number 9. Its correct answer should be doctrine of colorable legislation. That says what cannot be done directly also cannot be done indirectly. अंकिता गुप्ता जी, 9th का A नहीं होगा. 9th का करेक्ट आंसर विल बी D. डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. ठीक है. नेक्स्ट. हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. How many schedules are there in the Constitution of India? Option A 10 schedule, option B 12 schedules, option C 14 schedule, option D 16 schedule. Constitution of India में in total कितने schedules हैं? 10 schedule, 12 schedule, 14 schedule, 16 schedule. Question number 10. How many schedules are there at present? So its correct answer is question number 10. Yes. Correct answer is B. Yes, Ankita ji. Its correct answer is B. That is 12 schedules. Now, ideally, we are going to stop here for the day. Tomorrow, we are going to start with CPC ka discussion of this particular question paper. MP Civil Judge 2019 Phase 1 Shift 1. अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to like the video, to subscribe the channel. Or I'm noticing bhai, when you people are attending the session, liking it, enjoying it, learning it, then why you are not pressing the like button? Just press the like button and go ahead. ठीक है. And if you haven't enrolled for MP Civil Judge Prelims का crash course, just do check it out. Link is in the description box. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए डिस्कशंस के साथ. Meanwhile, stay healthy, stay happy, take care, bye bye all of you.